Okay, hi everyone, my name is Shelly Baklewal and I make beauty, lifestyle and fashion videos. So if you're interested in any of these, you might want to check out my channel. Don't mind my hair, I know बहुत frizzy लग रहे हैं. मैं कर्ली मेथड यूज़ कर रही हूँ तो इसमें नो हीट इज़ रिक्वायर्ड और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती हूँ. और क्योंकि बारिश का मौसम है तो बहुत ह्यूमिडिटी हो रखी है तो इस वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा फ्रिज हो रहा है. तो प्लीज़ जस्ट डोंट माइंड द वे माई हेयर लुक्स and you can just ignore them and we shall continue with the video. So in today's video I'm going to show you different, actually 5 DIYs that from which you can get brighter skin and very glowy and youthful skin basically, which I guess we all want, especially if you are in your 20s or maybe late 20s. You really need these फेस मास्क. और ये जो फेस मास्क हैं ये ड्राई स्किन और कॉम्बिनेशन स्किन, तीनों स्किन टाइप को सूट करेंगे. तो विच एवर स्किन टाइप you have, you can use these face mask. Okay, so without wasting any more time, let's start with the first face mask. The first face mask has to be the honey face mask. So you don't have to do anything in this, just grab a honey and put it on your skin and leave it for 10 to 20 minutes and you will see the results. The results that it gives you are so insane and it looks so good. Now you have to just apply it with your fingers and apply it evenly, massage it for a couple of minutes and then just wait for 10 to 20 minutes. और उसके बाद you can just wash it off with water. After that face mask you will see the drastic difference because आपकी skin इतनी hydrated लगेगी, इतनी glowy लगेगी और it looks like आपने बहुत महंगी जगह से फेशियल करा के आए हो. आई स्वेयर इट विल चेंज द गेम. I apply so much skincare but nothing gives me that good results that the honey gives me. I really like coffee and honey as my face mask because उनका कोई side effect नहीं है as such. अगर आप कोई ऐसा face mask लगा रहे हो जो कि किसी सर्टेन लेवल पे जाके ख़राब हो सकता है, जैसे लेमन हो गया, जैसे टोमेटो हो गया, ऑफ कोर्स यू कैन यूज़ दैम बट उनके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं. अगर वो एक सर्टेन लेवल से ऊपर या नीचे उनका pH लेवल हो गया है तो दे आर नॉट दैट गुड फॉर यू. बट कॉफ़ी और हनी आर दोज फेस मास्क जो कि आप कभी भी कैसे भी लगा सकते हो. इनफैक्ट डेली भी लगाते हो अगर आप हनी, इट विल नॉट डू एनीथिंग बैड फॉर यू. और अगर आपकी ऑयली स्किन है यू डोंट इवन नीड टू अप्लाई एनीथिंग after a honey face mask. Now I'm talking about coffee face mask. Number 2 is coffee face mask. You can just mix coffee and a little bit of water. It will turn into this gooey liquid and you can just apply it with your fingers, leave it for 10 to 20 minutes again and you will see the difference. And coffee is really good for your under eyes as well if you have darkened under eyes because caffeine usually reduces the darkness and the dark spots that you have, so it will give you a brighter skin and especially you can do it on your under eyes. Honey also you can use on your under eyes as well. Now just leave it for 10 to 20 minutes and you will see the major difference. Or with that we are on the third face mask, or it's a face scrub, not essentially not a face mask. So in this face scrub you are mixing a refined sugar. It should not be normal sugar, उसको थोड़ा बारीक होना ज़रूरी है. आप 1-2 बार उसको मिक्सी में पीस के भी बना के रख सकते हो if you want, but it should be refined. मैंने ये एक पैकेट यूज़ करा है जो कि मैं जब होटल से उठा के ले आई थी. Now you can use that as well. You can just store them and whenever you need it you can use them. I like to make lip scrubs also with that. Yeah, so you have to mix refined sugar, you have to mix coffee and a little bit of honey and you have to massage that mixture on your skin like you are scrubbing your skin. But this is way natural and really good for your skin. It will not create any sort of micro tears on your skin जो कि normal face scrubs create कर देते हैं. But because sugar and coffee will melt down as you scrub your face तो वो कुछ हार्शनेस नहीं होती है. और हमने क्योंकि रिफाइंड शुगर यूज़ करी है तो उसमें कोई शार्प एजेस नहीं है, तो दैट विल मेक श्योर कि आपको कोई माइक्रो टीयर्स नहीं है और इट विल मेक योर स्किन लुक
so hydrated and so glowy. I know I'm using this word glowy again and again, but these face mask does create that difference कि आपकी अगर डल स्किन हो रही है तो आपकी स्किन को एकदम ब्राइट कर देगा और एकदम नया जैसा बना देगा. और ये स्क्रब यूज करने के बाद योर स्किन विल फील सो सॉफ्ट एंड सो बेबी लाइक. आई लव इट. नाउ यू कैन सी आई हैव अप्लाइड मेकअप, बट मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं किया है. बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही लाइट लेयर का मेकअप करा है. और मेरा मेकअप कितना अच्छे से बैठा हुआ है फेस पे बिकॉज आई स्क्रब्ड माई फेस वेरी नाइसली एंड इट लुक्स सो यमी एंड सो गुड. Does I don't have any bumps or anything right now on my face. Now fourth face mask is to use a chandan powder or chandan paste on your skin. It will brighten your skin like no one's business. It makes your skin so good. I'm using a very raw chandan powder that you get in the market. This is from KHADI, but uska dabba kharab ho gaya tha, so I've stored in a different container. Now you can use any chandan powder or paste, or you can use the chandan stick that you get in the market. Any chandan, just mix it with the water and apply it on your skin. Leave it for 10 to 20 minutes and you are good to go. Just wash it with the water and your skin will look so plump, so juicy, so good and so bright. I'm telling you, it will look good. Now fifth and the last thing that you can do is apply a vitamin C 2 to 3 times a week. You can use it day or night, whenever you want. I would say preferably use it at night. अगर अभी तक आपने उसको अभी यूज़ नहीं किया है तो प्रेफरली यूज़ एट नाइट. और दो या 3 से ज़्यादा बार एक वीक में मत लगाना. दिस विल मेक योर स्किन सो गुड. और अगर आप एलर्जिक हो विटामिन सी से और अगर आपको ये नहीं पता है तो जस्ट अप्लाई इट हियर फर्स्ट and leave it for 24 hours. और अगर उससे कोई रिएक्शन नहीं होता है तो you can apply it on your face. These are the 5 face masks slash things that you can do to get brighter skin. Let me know which one will you try. By the way, I have a detailed video for vitamin C here. You can check it out. Let me know which face mask you will use and you will try in the comment section below. And if you found this video helpful, you can hit the like button. And if you want me to create such kind of videos, let me know. And subscribe to my channel if you like the vibe. And you can hit the notification bell as well, so that every time I will upload the video, you will get notified with that. It's a wrap. Bye.